वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन. और एक और भी गिव अवे हो रहा है. ज़ाहिर आप संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन देख रहे हैं और आज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ चेसफुल ट्रैवल व्हाट विल यू गेट. और ये मैं नेशनली बता रही हूँ आप लोगों को ताकि कोई ये ना कहे बाद में जी लुबना ने ये कहा था उस दिन. You are going to get $100 off for your trip to Pakistan or India. Obviously, there are some exclusions, so you have to call. And किस तरह आप जीतेंगे? The first caller who calls right now, and the number is 855-886-6387. So let me just clarify that you get $100 off for going to Pakistan or India. Obviously, there are certain dates, and just want to let you know that. So good luck. Start dialing right now. चलें टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू विद यू ऑन a very important issue because when it comes to real estate, people have demands master bedroom downstairs, people have demands bedrooms downstairs, they might want a lake view, they might want a different community. Now what happens, what I've heard, what I've seen, that when you have a real estate agent, why is it important to have the real estate agent on your side? Because many times they're like, you're looking at a home and you're getting a home and that real estate agent is saying, no, do this. And you're like, wait a minute, aren't you on my side? So why is it important having a real estate agent on your side? It's a very good question. You have to, the real estate agent first has to listen to your needs and wants. Right. That's what I do the best. I listen to all your, what you want in the home, what your requirements are, what your financial situation is. Right. So because buying a home is one of your biggest investments. In life. And you have to look at all the whole picture. Right. And since we are doing this all full time, Right. I know what are the ins and outs of this Right. business. And also I can help you in the sense of steering you to the right areas you want to, after talking to you, what are your requirements. If you have young kids, schools are more important Right, for our of course. people. So, and you want a good area, you want an area which is going to appreciate in value. So all the things we have to look at because buyer they just have a look more emotional. They look at a good house and say, wow, I would just want to get that of house. course. But we look at it from a professional point of view, that what are the plus points of this, what are the negatives of this house. Right. Sometimes it's not in the right area, it may be a Right. good So house. you actually give them the opinion, no, this area isn't good or this isn't right, because many times people might see it and say, oh, it's a perfect home, but you know the area, you know all the information pros and cons about of that house or Of that course. area. And that's a good thing. That is more important because in the long run, that is what's going to count. The emotional part goes away after I know. It gets two tough. weeks. Right. So basically you can literally tell them that it's good for them or not, because it is the biggest investment in a person's life. And many times affordability becomes a big thing. Sometimes people are living in a rental, they want to buy a home. Sometimes people are in a home, they need a bigger home, they need a smaller home. So you can cater to that. Right, and we work with a group of investors, I mean not investors but mortgage companies. Right. The main thing the buyer has to do first is to get them pre-approved. Right. So that they can have an idea of what they can afford. Right. And what is their top. Right, what they can afford. Yeah. I mean, it's like, well, you shouldn't be looking into a home that you can't afford, Cannot because afford, then right. you would have. Many times people say that I'll get approved, don't worry about my approval. Right. But then they look at a house that is not affordable. Of course, and then When they come to reality that they cannot afford that, right. and then all their hopes are shattered, and they say, And then it's, oh, now I can only afford this house. Of course. So that is why we have to first have a pre-approval letter, and then come to make sure that what is your level. Right, Yeah. and then do it. Yeah, you can always buy below that, but you cannot go over that. So that is why you have to keep your threshold where you have to cannot go over. Of course. And see at homes under that price range. And of course, after that, the price is the main thing. After that, you can always look at different things, different locality. I mean, areas and stuff. Features and whatever. Okay. And you talked about prices. मैं वापस आप पे आती हूँ चेसफुल ट्रैवल के ऊपर कि जब आपकी ये स्पेशल्स में TV1 में सिर्फ TV1 ही माने लगा हुआ है, मैं सभी चैनल्स कटवाने वाली हूँ बहुत जल्द. But TV1 पे क्या, I mean honestly you advertise everywhere, but आपकी जो स्पेशल्स आते हैं एंड लिखा आता है कि जी इतने का स्पेशल है, किस तरह से आप बताते हैं और क्यों ज़रूरी है कि लोग जल्द से जल्द फ़ौरन वो कहते हैं get the ticket is right away.
डेफिनेटली सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि ये कम्युनिटी की सपोर्ट है. आई बिलीव इन टीम वर्क जो है मेरी टीम अकेली नहीं है. जब तक आप टिकट हमसे परचेज नहीं करेंगे हम डिस्काउंट नहीं ला पाएंगे, एयरलाइन के साथ निगोशिएट नहीं कर पाएंगे. वी नीड अ नंबर ऑफ कॉल्स, वॉल्यूम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. चेज विल ट्रैवल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ऑल ओवर यूरोप के अंदर हम लोग हैं आपके लिए. तो हम ग्लोबल डिस्काउंट ला पाते हैं. चेज वर्ल्ड ट्रैवल इज़ दी ओनली ट्रैवल एजेंसी जिसने स्टूडेंट फेयर को इंट्रोड्यूस करवाया था, टीचर फेयर को इंट्रोड्यूस करवाया था, यूथ फेयर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि किसी भी एजेंसी को मालूम नहीं था कि ये डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर. तो निगोशिएट कैसे कर पाते हैं, आपके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं. ह्यूस्टन से मैं आके एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए तो डिस्काउंट आते ही नहीं थे. 2000-1500 का टिकट मिलता था, कभी किसी ने सुना नहीं 899 का भी होता है. जब उनको बताया गया जनाब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो ट्रैवलर्स हैं वो ज़्यादा हैं, एक एयरलाइन नहीं, दो नहीं, तीन एयरलाइन ऑनलाइन है जो ह्यूस्टन से पाकिस्तान जा रही हैं आज, 899 की प्राइस है. आप ये देखें कि उम्रा कितना आसान हो गया. अभी आपने चेज वर्ल्ड ट्रैवल की तरफ से $100 ऑफ किया. मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करूं. एक बंदे को नहीं मिलेगा, 15 लोगों को $100 का ऑफ मिलेगा उस टिकट पे जब आप पैकेज एक बुक करेंगे उम्रे का चेज वर्ल्ड ट्रैवल के थ्रू. $100 ऑफ विद 15 पैकेजेस जो भी है. आप हमें कॉल करें, जो सबसे पहले 15 लोग बुक ये तो बता रहा हूँ कि लुबना का शो देखा था, ये TV1 देखा था, इतना तो डेफिनेटली लुबना का शो क्योंकि बहुत पॉपुलर है. ऑनेस्टली अभी तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ लोग जो है वो TV1 को ही वॉच करें और संडे को सुबह उठ के बैठ जाते हैं. डेफिनेटली ये पैकेजेस मिलेगा. निगोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हमारे लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं उनको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. जितने भी TV1 वॉच कर रहे हैं आपको चाहिए चेज वर्ल्ड ट्रैवल को एक इंक्वायरी के लिए कॉल करें. हम ये नहीं करें कि सिर्फ टिकट बनाने के लिए कॉल करें. और अनदर थिंग 24/7 हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि अगर आपने गलती से टिकट किसी ऐसी एजेंसी से या ऑनलाइन ले लिया जहाँ से आपको सर्विस नहीं मिल रही है, कॉल अस एंड वी कैन हेल्प यू फॉर फ्री ऑफ चार्ज. मतलब दैट इज़ द ब्यूटी कि आपको एक ऐसी देसी एजेंसी जो आपकी अपनी हो जिसमें आप काम कर सकते हैं और प्लस आप टिकट बना सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं और हेल्पलाइन आप लोगों के लिए अवेलेबल है. चले आपसे तो बात कर ली है. Nuran, I wanted to ask you, I remember when I had gotten married, so my husband and I were getting our house built and my husband's very laid back and I shouldn't be saying this on TV and he was saying कि कोई बात नहीं करिए घर में नहीं है. मैंने कहा नहीं, this is our home, it's a big investment, it's not a simple thing and I want this and that. And the real estate agent we had back then, I did not know you back then, so it's not my fault. But now, if anything, I will definitely let you know. But basically, it was like where I felt like he was telling me, the real estate agent, it's okay. And I was like, no. Now, when someone comes to you and says, you know, this is the house we want, or how can you take the time out? Because I think being a real estate agent, I think the one quality should be patience. Right. If someone wants to see 2 homes, they want to see 5 homes, having that patience. So how do you help out with that? On that, I can say that I'm very patient and I always try to look at the buyer's requirements and, as I said, and work with them and I show them 5, 10, 15, 20, however. Well, you shouldn't say that on TV. Now they're going to say 20 घर दिखाइए आप, आपने कहा था. I mean, my clients know how patient I am and they can vouch for it. In fact, I shouldn't say this, but I've shown homes for people for 3 or 4 years also. Wow, wow. So that's how patient I am. But I want to make sure that that guy or that person is buying the right house for them. Right. It is. And it's their dream, so you want to really. It's their dream home, and it it has to be 100% what they want. Right. There are agents out there who just want to rush you, as you said. Right. You write a contract and issue 5 homes. If you see a 6th home, I'm out of here. I know. So I'm not that kind of an agent. Of course. I like to take their time and make sure there is the right house for them. Right, of course. The right price. We negotiate the price. Even after the price is negotiated, everything is done. Then comes the inspection stage. We make sure that everything step is by step. And then comes the mortgage, the loan. I'm with them. With them. In the whole process. Okay. Up to the closing time and the closing date.
And until the house is closed and they have the keys in their hand, You open the door and I'm they with go them, in. You're with yes. them. And that's important to have a real estate agent who is with you step by Right. step. One more really important thing I wanted to ask you really quickly was people who are watching right now and they want to get a vacation home, in California, or they want to get a vacation home in Dubai or something. I know, and Martha Turner Sotheby's is international. Yeah, we can you help help them out in with that. that? Definitely, we can help them in that direction. All they need to do is call me, and whichever city they are in, we will get them in contact with the competitive, Of course. experienced real estate agent there, and we can work with them. Okay. And we will also keep a watch. I mean, You watch that on that. too. And Yeah. and I think the So- beginning you said it's a big investment. It's not buying a shirt, it's buying a home. And my husband was like, she brought this up on TV, but it's important, and I mean, course. real estate, even with traveling, you want to get the best deal. You want something where you know that you didn't spend too much money. If you are getting a ticket to Switzerland for a family of 4, you need to plan it out. At Jace will Travel, I know with the prices, you can package it. आप package कर सकते हैं इस तरह से कि लोग एक फायदा चीज़ उठाएं। में रियल स्टेट से जो हमारे पास इंक्वायरीज जनरेट होती जी। है, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी में देखा है जी। कि काफ़ी लोग जो TV1 को एज ऑफ दिस मोमेंट वॉच कर रहे हैं, तो इनके पास जो इंक्वायरीज जनरेट होती होंगी, जिस तरह हमारे पास भी, कि कैलिफोर्निया से काफ़ी लोग ह्यूस्टन मूव हो रहे हैं, Yes. न्यूयॉर्क से काफ़ी मूव हो रहे हैं, इवन कनाडा में वॉच किया जाता है, वहाँ से माइग्रेशन काफ़ी हो रही है। तो रॉन आगा जी तो इस टाइम पे ऐसी जगह पे बैठे हैं कि इनके पास तो कॉल्स है कल से। आई एम जेलस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म TV1 ने प्रोवाइड किया है कि लोगों के पास जो हम लोगों को कॉल करते हैं एज अ फ्रेंड, या आपको कॉल करते होंगे न्यूयॉर्क से, यार ज़रा देखना कोई रेंट के ऊपर घर है या देखना कोई घर सस्ता है, तो उनको डायरेक्टली रीच करें एंड ही विल सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी इतना टाइम स्पेंड होता है, आपको फ्री कोड देंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस है कि लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, वेकेशन होम अगर आप डेफिनेटली उस लेवल के ऊपर हैं जो वेकेशन होम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हम इनके साथ मिलके एक प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका अच्छा वेकेशन हर साल बना सकते हैं। तो देयर इज़ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अगेन इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट मी ओनली, इट्स नॉट ओनली लुबना, इट्स अ टीम वर्क फॉर TV1 अलॉन्ग विद जितने भी और हमारे देखने वाले हैं इस टाइम पे हमें सुन रहे हैं, वो अगर हमारा साथ देंगे तो हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। हमारा ग्रो होना पाकिस्तानियों का ग्रो होना है, और हम लोग प्राउडली फील करेंगे यहाँ पे रहते हुए कि हमने कुछ किया है अपनी कम्युनिटी के लिए। और ये बात है पाकिस्तानी के खाली नहीं, इवन जो लोग इंडिया के हैं, श्रीलंका में, ये सब इट्स अ साउथ एशियन कम्युनिटी। लाइक आई सेड इन अर्लियर कि अमेरिका हमारी पूरी कम्युनिटी है। बिल्कुल। एंड रॉन, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल वंडर मैनी टाइम्स कि घर लेना है, घर खरीदना है। बहुत दफ़ा ये होता है, अभी वेकेशन होम की तो मैंने बात की, लाइक यू सेड, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बट मेनी टाइम्स पीपल वांट टू गेट अ होम फॉर देयर मॉम एंड डैड। लोग अपने बहू बेटे को घर लेके देना चाहते हैं, लोग अपने सास ससुर के घर लेना चाहते हैं। सो इवन विद दैट, विद सर्टेन, बिकॉज बजट डिफरेंट भी होता है, यू कैन हेल्प आउट विद दैट थिंग टू। आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दैट अप, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। Yes, and as you said, that right now there are a lot of people coming from California, and it is a fact. Okay. My last 2 or 3 clients one was from Chicago, So they one were. is coming from New York. In fact, one lady was in Dubai and she called me from Dubai. Wow. And Well, that's what we happens were- when you advertise with TV1. Okay. Right. तो I see I'm marketing for TV1 जिंदाबाद, right? Right. Well, I That want, of course. It is true that we are now an international melting point. Houston, everybody Of is, course. especially it's becoming a retirement place for a lot of people in Of the course. north who want to get away Get away from from the Canada cold and and cold. Of want course. to get away from the snow and stuff, और and वैसे they भी want to come to देखें, Houston. जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले ह्यूस्टन में जो सबसे पहला काम किया जाता है, वो रेंट पे नहीं जा रहे, आजकल घर खरीद। घर खरीद रहे सीधे सीधे। Well, definitely, we're running out of time now, so I want to say thank you to you कि आप आए यहाँ पे। Thank you very much for taking out the time. And Ron, thank you so much for coming Thank out you. too. Thank you you for very much to bringing us both of on, you. Anji. And time आ गया हमें शो रैप अप करने के लिए। आज इतनी तेज़ी से ये कहते हैं बातें करते हुए चले हैं। और of course, thank you so much to all of you for bringing TV1 into your lives. I know you have many choices and you choose TV1, so thank you so much for that. And you can see this is what we're trying to do, what TV1 is trying to do. These shows you watch, this show that you're watching, it's being televised right now all over Canada, all over US.
So thank you so much. And this is the first, I have to say, dish channel which is from Houston. لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور TV1 نے کر دکھایا. So thank you so much for giving us the love and support. جانے سے پہلے I do want to thank Faisal Kamal of Embassy Suites for providing us this beautiful venue. If you are planning an event, do give them a call and let them know you heard it on Sunday Brunch on TV1. And of course, جہاں رہیں خوش رہیں, زندگی بہت چھوٹی ہے, ہر ایک سے بنا کے رکھیں. لیکن اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو کچھ کیجیے اس کے بارے میں, جو کل وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.